just one more minute, beta, huh? Let me check out with the connection. Then we are done. So guys, we are live, right? Just one more minute, beta, huh? Yes. The So we are live on YouTube as well, right? So here we go. To see my screen. Yes, sir. To understand, last time we studied coordinate geometry, right? Now today we are going to study the application of it. हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? Application. So the points to remember. So basically, when we talk of trigonometry, there are three things which comes into picture. Last time so what are the three things that comes into picture, my dear students? थोड़ा सा याद आ रहा है? Yes, सबको याद आ रहा है क्या क्या पढ़े? डिस्टेंस फॉर्मूला है ना? So for example, if I want to calculate distance between x1 and x2, so I calculate this distance is x2. This distance is x1. So बीच वाला distance क्या हुआ बच्चा? AB, come on. x2 minus x1, right? Yes, sir. Very simple. है ना? अब Yes, sir. next, अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, अगर आप देखो दूसरा x2 माइनस x1 तो समझ गया हम लोग को ऑन, हम लोग ने x एक्सिस पे देखा. यही अगर ऊपर हो गया तो the distance even if it is above then still this distance will be the same na, x2 minus x1. Agreed? Yes, sir. This distance will be equal to this distance. Then in the vertical portion this distance is considered as y2 and this distance is considered as y1. So therefore बीच वाला distance क्या होगा बोलो बच्चा? Vertically along y axis y2 minus Y1. y1. Right? Then we have studied distance formula. So how to study distance formula? This is point A. This is point B. You know very well what I am going to do. I taught you earlier. This is x1, y1, and this is x2, y2. So this distance is calculated as I told you last time, that is distance is x2 minus x1 the whole square into y2 minus y1 the whole square under root of the same. Right? So this is distance between AB, or in simple word, the segment AB ka length. Is this okay, guys, all of you? Yes, sir. Yes, sir. So we can solve any distance formula by using this. Suppose there are some complicated things that we should know, right? Like, अच्छा तुमको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी ये वाला कैलकुलेशन देखते हैं, है ना? लेट अस वॉच दिस कैलकुलेशन प्रॉपर्ली. So if I want to calculate distance between what and what? W and X. So what I will be doing? See the way I am doing the calculation. See the formula will remain the same, right? Important is calculation. So you must understand हम लोग उसको बराबर designate भी करते हैं. For example, if I put this as x1, y1, so this has to be what? x2, y2. So we have x2 minus x1 the whole square. x2 minus x1 the whole square के लिए अगर आप देखोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 11 माइनस ऑफ -7/2 का होल स्क्वायर. एग्रीड? एंड Yes, व्हाट sir. एल्स? 4 minus 4 का whole square. Yes, sir. Now this is such a pretty simple thing because I know this will become 0, right? And square root and square will cancel. The only thing that is left is 11 plus 7 by 2. And this is 22 plus 7 by 2. So ultimately the answer is 29 by 2. Agreed all of you? Yes, sir. Yes, sir. So please take a screenshot of this. ये simple था. तो ये just मतलब आज अपन कल से अपन सॉरी कल से नहीं मंडे से अपन रिवीजन शुरू करेंगे. और आप लोग के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि मैं पूरे आप लोग के स्टेट बोर्ड के पेपर 1 पेपर 2 मिला के कितने चैप्टर्स है बेटा? मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री मिला के कौन बताएगा? हाउ मेनी चैप्टर्स टोटल? Sir, maybe 13. मे बी 13. ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स ही पकड़ो. ये पूरा मैं 8 आवर्स में पढ़ा रहा हूँ, वन शॉट में यूट्यूब लाइव में. और जो सीबीएसई का 14 चैप्टर्स है, इनको कंस्ट्रक्शन रिमूव हो गया. तुम लोग को कंस्ट्रक्शन है ना? इंडेड तुम्हारा ज्यादा लगेगा, थोड़ा 9 आवर्स कर देते. ये 9 आवर्स में पूरा कंप्लीट कराऊंगा और ये यूट्यूब लाइव होगा, पब्लिक होगा. बट बेनिफिट तुम लोग को ज्यादा मिलेगा बिकॉज तुम लोग इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, है ना? यहाँ पे सिर्फ पूरे चैप्टर्स को कैसे इतने कम आवर्स में पूरा पढ़ा जा सकता है विद 80% एक्यूरेसी. और सीबीएसई 14 चैप्टर्स को मैं 8 आवर्स में पढ़ा रहा हूँ. ये सब यूट्यूब लाइव है. सो गाइस, now let us understand a question which is worth our exam. So अभी कितनी मार्क्स के लिए अपने को प्रूव करना है ना? या फिर 8th वाला देखो. Show that the points are the vertices of equilateral triangle. So how do I prove that it is the vertices of equilateral triangle? We draw the triangle and we name it as what class? A, B, C. BC. And since I have to prove equilateral triangle, so I have to show what I have to show, that AB All distance sides are AB equal. equal to BC equal to CA, right? So AB is 1 comma 2, B is 1 comma 6, and C is very different. What is C? C 1 plus 2 root 3, comma 4. 1 plus C is 1 plus 2 root 3 comma 4. So when we calculate distance AB by the distance formula, it came out to be root 16. And when we calculated, that is root 16 is 4. So first answer that we got of distance AB is 4. Similarly, when we calculate distance BC, here the calculation shows that this 1 gets nullified and 2 root 3, that is 4 3 is the 12 plus 4, again it comes out to be root 16, and root 16 is again coming out to be 4, right? Similarly, distance AC, as you can see, distance AC will also come out to be how much, beta? Can't you see what is distance AC? AC Root is also 16. coming out to be 4. So 4. AB equal to BC equal to AC. All are coming out to be 4. So this is 4, this is 4, this is 4. Therefore, this is proved that this is an what triangle, beta? Equilateral, Equilateral. Triangle. right? Please take a note of this.
If it is done, let me know. तो शेयर करना, मैं वो पेपर डिस्कस करूंगा. हाउ डू यू Sir, शेयर? sir on सारा WhatsApp समझ, group. हाँ व्हाट्सएप ग्रुप. अच्छा सारा, तुमको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके. वेल आर यू लास्ट टाइम? Sir, I have sent the question papers of algebra and geometry in the group. Great. We will take few of the questions today, then we will discuss the full length paper. So is this over, all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. now let us Yes, sir. understand. Just a minute, coordinate geometry का मैं निकाल लेता हूँ, एक मिनट. हाँ, coordinate geometry. सारा, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन से नंबर का चैप्टर है, पता है? कुछ आइडिया है? एक मिनट सर. सर 7. Sure? 7. अब थोड़ा सा देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा. दिस इज 7th चैप्टर इन योर कॉन्टेक्स्ट. So chapter 7 is coordinate geometry. Now let us understand this with respect to MCQ. MCQ दोनों को आते हैं? Multiple choice question, yes. CBSE and state board, yes. दोनों को आते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes, sir. हम्म. So now ये MCQ कितना इजी भी है और वर्थ है ना, एक मार्क के हिसाब से. क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन 3 5 एंड दिस इज गिवन टू बी हाउ मच? 15. So I know what is the distance formula. D is nothing but under root of x2 minus x1 whole square. So what is D given to be? How much beta? कितना दिया हुआ है? 15. 15. And if I say this is x1 y1 and this is x2 y2, then we can say minus 5 minus of minus 5 like this. And this is x minus 3. So this will nullify. This will become 0. So finally what we have, 15 square is 225 is x minus 3 the whole square. So how the calculation goes, guys? Taking what both sides? Square root Square root. both sides. So this will nullify this. But square root has two possibilities, plus minus 15. So this is x minus 3. There are two cases. Either x minus 3 is 15 or x minus 3 is, yes class, Minus minus 15. 15. Therefore, either x is 18 or x is 15. Minus 15 plus 3 is nothing but minus 12. So, but x distance cannot be what? Negative. Negative. Distance cannot negative. So, but still they are asking the values of x only, na? So these are x. So answer is, which option is correct, beta? Minus 12 Eight. and 18. So that is B option Eight. is correct. Getting my point, all of you? Yes, Yes, sir. Please take a yes, sir. note of the data. Just write down the data, key points. गिवन पॉइंट्स लिख दो और x की वैल्यूज ऐसा निकालो. बस जितना मैंने कलर में लिखा ना, एनोटेट किया ना, उतना ही सॉल्यूशन लिखो. दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन.
सारा एमसीक्यू के ऊपर कमांड कैसा है आपका बेटा सीबीएसई के लेवल से? सर एमसीक्यू में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। बिकॉज दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बाकी बच्चे अलायना, समी, सुमेरा, वैष्णवी, Sir, sometimes easy, sometimes hard. समटाइम्स इजी समटाइम्स हार्ड। ओके, Yes, Same sir. goes with me, sir. मैं तब तक कि ये सैमी क्यों नहीं ज्वाइन किया यार? सैमी को ज्वाइन करना चाहिए ना। सैमी का नंबर क्या था मेरे को याद नहीं। हाँ, सैमी प्लीज ज्वाइन। His exams are going on, reports. अच्छा, फिर ये अपना अभय भी ज्वाइन नहीं किया। Sir, चलो डन। यस सर। yes, sir. Now let us take some good examples, है ना? Now this is distance formula. You know distance formula? This is really wonderful question. What is distance formula? Let me tell you. If AB gets divided by C by two segments, that is M is to M. And if this is, yes class, X1, Y1, and if Then this is Y2. then what is the process, my dear students? M times x2 and n times x1. What is that? This m times x2 plus 2 n times and x1 x1 upon m plus plus n. 1. This comes out to be the green wala x, बीच वाला, समझा? Yes. यस सर। है ना, ग्रीन वाला x। ये यार गड़बड़ हो गया यार, फिर से मिटाना पड़ेगा, एक मिनट। So this comes out to be green वाला x. So that means this comes out to be this x. Got it? तो यहाँ पे A का रोल कौन प्ले कर रहा है? x1 y1। B का रोल कौन प्ले कर रहा है? x2 y2। Y2. और मुझे ये किससे कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? दिस इज m एंड दिस इज n and p is dividing in the ratio this. So this is our x comma y. So I know our x is given by s plus this wala formula, right? Is it or not? यस सर। Yes. This wala formula. So how do I proceed? See the beauty of this question. This requires a very basic calculation. So what I'll be doing is this m, एक मिनट, हाँ, this thickness थोड़ा कम कर लेते हैं। This m multiplied by, I think it is not taking my, it is not taking the value of what I want. So let me do it. This m multiplied by this and n multiplied by this. Are you getting my point? So what is that? 1 multiplied by -7. So 1 multiplied by -7. And then this is 2 multiplied by 2 upon 1 plus 2. So this will give the value of k. So came out to be -1. So what is the value of k? K is -1. Is this Minus. understood? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Please take a note of this. Very simple. This is different formula. तो ये दिल्ली बोर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड पेपर के हिसाब से आया है सीबीएसई में भी। और you can expect such question in state because this coordinate geometry being almost same for state and CBSE. Please write down the annotated part, the diagram, the figure, the diagram, figure along with the given, details. Is it done? Yes, sir. Mistake. You do
क्वेश्चंस, है ना? Now this 3 points वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट वाला देखो, है ना? Find the coordinates of trisection. So this question is really important. Let me highlight this. So what we have to find? Find the bolo coordinates of trisection of the line segment joining points ABC. So if you understood it well, so हमारे पास फिगर कैसा होगा? एक मिनट, हाँ, ये थोड़ा सा ये क्रॉस करना पड़ेगा शायद। हाँ, अभी हमारे पास फिगर कैसा होगा? ए दिया हुआ है, ए कितना दिया है बच्चा? 1, -2, राइट? और ए इतना दिया हुआ है, राइट? ए इज गिवन टू यू दिस मच। बी कितना दिया हुआ है? -3, 4। अब मुझे क्या करना है? ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन? बाइसेक्शन मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड। सो दिस इज 1:1:1। सो हाउ मेनी पार्ट्स? So this segment has been divided into how many parts? 3 parts. And therefore this question is important because this shows points of trisection. Now how to solve this? This is really important question. Suppose I want to get P and Q. What is the process? ना बहुत सही है, ध्यान से सुनना। अगर मुझे P निकालना, हाँ, हेलो, यस, Nothing. तो P निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। ना आई ड्रॉ द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू। P के लिए मैंने ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा करके फिगर बनाई, ये A ले लेते हैं और इधर P, और थोड़ा दूर में कौन है? B. So P divides, yes class, P divides AB in the ratio 1:, guess what? ये तो 1 हो गया, और ये 1 + 1 कितना हुआ? 2. Agreed all of you? Yes. 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 Yeah. So P divides in the ratio, as you can see easily, in the ratio 1:2. So ये वाला फंडे से ही करेंगे ना अपन, जो फंडे से अभी मैंने सिखाया आपको, 1:B वाला coordinates into this वाला. So they have done it. So this divides in the ratio 1:2. This is 1:2. So 1 into क्या हो जाएगा? 1 into -3, 2 into 1. देख रहे हो? 1 into -3, 2 into 1. And what? 1 + 2, 3. So इससे मुझे x1 पता चल जाएगा। P का ले लेते हैं क्या? x1 और y1. Similarly y1 कैसा निकलेगा? Same process but with the coordinates of y. तो अपने coordinates कितने निकले? You can see easily. The coordinates 10 are found out to be how much बेटा? एक निकला -1/3 और एक क्या निकला है? 0. समझा कि नहीं समझा? कि और एक बार समझाओ। देखो, this distance, yes Sara and all of you, ये is 1 and this Yes, ऊपर वाला distance is 2. So this is 1 multiplied by -3 and this is 2 multiplied by 1. So therefore we, after calculating, we get 1/3. Similarly this is 1, जैसे मैंने x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया वैसे किसको करूंगा? y को करूंगा। तो फिर से इसका आंसर निकालने के बाद क्या आता है? 0. तो पहला कोऑर्डिनेट अपने को क्या मिल गया? p कोऑर्डिनेट बोलो, -1/3, 0. 0. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Similarly we can see same figure, but अब फिगर में क्या चेंजेस आ जाएंगे बताओ बच्चा? अभी फिर से मैं फिगर तुम्हारे सामने बना, अभी A Q किसके साइड है? B के साइड है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1. तो फिर से सेम प्रोसेस, दिस इज 2 into B वाले कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज 1 into A कॉलम। तो उससे भी मुझे क्या मिल जाएगा? Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और इस बार Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? सेम प्रोसेस से, दैट इज -5/2, 2. डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आपसे sir. पूछ रहा हूँ, सारा, वैष्णवी, जितने बच्चे बैठे हैं, आप लोग ने Yes, sir. इस टाइप का क्वेश्चन किया है क्या इससे पहले? सच बताओ, ट्राइसेक्शन वाला, ईमानदारी से। Yes. हाँ, Yes, sir. sir. It is NCERT given में. in the exercise.
क्लास सेक्शन में किया है। सारा आपने किया है? हाँ सर, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है। तो ट्राइसेक्शन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्शन वाले तो आते ही रहते हैं, बट ट्राइसेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो केसेस होते हैं, एक बार पी के साइड से लेना, एक बार क्यू के साइड से लेना। मैंने दोनों केसेस लिया। और ये कितने मार्क्स का होता है? अगर ये देखो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये मेरे को लगता है करीब करीब 3 मार्क का होना चाहिए। कितने मार्क का आता है, कोई अंदाज? ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स। और पता नहीं, देखो मेरे को तो लगता है, देखो अभी डिपेंड्स, है ना। कभी कभी ना बड़े लंबे क्वेश्चन के लिए ना मतलब लंबे मार्क्स के लिए, बड़े मार्क्स के लिए छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, पता है तुम लोग को? अभी किस तरह से तुम्हारे साथ, और पता नहीं, देखो मेरे, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, for Yeah. finding the coordinates of P, can we take APQ instead of APB? See, we could have taken, but we cannot take, good question by the way, we cannot take for a simple reason, beta. You can understand, because Q के coordinates known नहीं है. We can always express P in terms of known coordinates. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, fair enough. So, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना खतरनाक है ना? Try to understand. This question will take you for a ride, पक्का। ये है 108वां क्वेश्चन, और ये 2024 में स्टैंडर्ड पेपर में पूछा गया। स्टैंडर्ड करके पेपर जो होता है सीबीएसई में होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड। स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। आई एम टेकिंग द कॉमन क्वेश्चन जो दोनों में अपियर हो सकता है। तो आर यू रेडी गाइस फॉर 108 सब्जेक्टिव? वेरी गुड क्वेश्चन। यस क्लास। यस Yes. सर। एंड आई बिलीव 5 मार्क्स तो सीबीएसई बोर्ड में होता है ना सारा? हाँ सर। व्हाट अबाउट स्टेट बोर्ड? स्टेट बोर्ड में 5 मार्क्स होता है? No, पूछ रहा हूँ। sir, only 4 marks. तो आप लोग का यही क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा इन दैट केस? 4 marks. चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आई एम हाईलाइटिंग। फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट। सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसका अपने लेवल पे फिगर बनाऊं, रेड कलर से दिखाता हूं, अपने लेवल पे फिगर अगर बनाऊं तो आप देख सकते हो कि देयर इज अ लाइन and there is a point, that is 8 by 5 comma y, and it divides this point, that is say 1 comma 2, and this point say 2 comma 3. In which ratio I don't know. Normally people will tend to take what? M is to n. क्या लेंगे? Let the ratio be, this class, M is to n. स्टूडेंट। But मुझे ऐसा लगता है M is to n in itself is some constant say k. तो हम लोग उसको k is to 1 लिख लेंगे। So this is k is to 1। अब समझा क्या किया मैंने? यस सर। Yes. इससे बहुत आसान हो जाता है। अब क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं रहा, अगर इतना समझ में आए। अगेन आई विल दे रिपीट, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। k मल्टीप्लाइड बाय दिस वाला एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय x कोऑर्डिनेट्स। सो यू कैन सी इजीली। देखो मैं करके दिखाता हूँ। k into 2, दिस इज k into 2, 1 into 1, 1 into up to k plus 1 is given to be how much? बीच वाला, and the beach wala is what? 8 by 5. Solving which we get the value of k, and k I told you it is nothing but what? It is nothing but what? M is to n. So therefore the ratio came out to be how much beta? M is to n. But we have to also we have to find the value of y. So इतना शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ी ना 4 मार्क के 5। अब वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए सेम प्रोसेस, बट वैल्यू ऑफ y चलो तुम्हारे सामने निकालता हूँ। Therefore y will be equal to what? अब देखो ध्यान से, हाँ, 2 इंटू k इंटू अभी किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? y कोऑर्डिनेट्स के साथ, राइट। सो k बोलो क्या? 3 इंटू k, बोलते जाओ, 3K. प्लस 1 इंटू 2,
upon, yes class, k plus 1, One. m plus n. So what is k? I know the value of k. That is nothing but 3 by 2. Am I right? 3 by 2 plus 2 ones are 2 upon 3 by 2 plus 1. Now I solve here as after this is nothing but 9 by 2 plus 2 upon 3 by 2 plus 1 is nothing but what? 3 plus 2 by 2. So this comes out to be 2 to the 4, that is 13 by 2, and this comes out to be how many? Sahi hai, 13 by 2, and this is 5 by 2, to 2 to cancel. The answer comes out to be 13 by 5. Let me check out with the answer. Yes, answer is what? 13 by 5. Is this okay, guys? All of you understood? Yes, sir. So you can take a note of this. Answer of what is 13 by 5, beta? The answer of y. And this is answer of what? K. So this question has two parts. First, find the value of ratio, that is K, that is m is to n, and then that is m is to n, right? M is to n, and then find the value of y. And you know what is y. I hope it is going good. समझ में आ रहा है Yes, सबको? yes, yes, sir. Hmm, Yes, sir. great. इसको लिखना हो गया तो बताएंगे. Yes, sir. Fine. Let me check out with this. समीकरण में भेजा है ना आपने पेपर, Yes. तो हम लोग देख सकते हैं पेपर का क्या लेवल होता है ना. तो आई एम वेटिंग जस्ट मिनट. हाँ, कहाँ गया? डाउनलोड्स में जाते हैं और इस पे एक बार करते हैं ये वाला पेपर, राइट? और ये वाला पेपर. Yes. चलो सबसे पहले, हाँ, अब पहले तो ये लिखना हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ. Yes. हो गया सर. Yes, sir. तो आप सभी देख सकते हो कि इस पेपर में थोड़ा ज्योमेट्री जो पढ़ी रहे तो ज्योमेट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं. अगर आप देखो कि पहला क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू आते हैं स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में, तो दोनों का ध्यान होना चाहिए. तो पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन जमा किया सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes. सिंपल. देखिए अगर एल स्क्वायर एल एम और एन है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर विल ऑलवेज डिनोट व्हाट? राइट एंगल Triangle. Right angle triangle. triangle, right? Now ये ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था, याद करो. Yes, sir. If I were to, ध्यान दो, if I were to show that this, so what is the first step that they did? So they have tan theta multiplied by tan theta. So that means उन्होंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया होगा? tan theta. Tan theta.
तो tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा. But 1 plus tan square theta is sec square theta. Therefore, tan square theta will be what, my dear student? It will be nothing but sec square theta minus. So therefore, we can see this portion will be sec square theta minus 1. Now, what is sec square theta minus 1? A square minus b square. What is a square minus b square? A minus b and what? A plus b. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, बट नीचे तो 1 प्लस सेक थीटा पहले से ही चले आ रहा, 1 प्लस सेक थीटा. अब ये 1 प्लस सेक थीटा का उन्होंने tan थीटा कैसे कर दिया, ये देखते हैं. मुझे ऐसा लगता है उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा हो गया. तो आपको ही लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रहा है, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली प्रूव ये करना है सेक थीटा माइनस 1, नीचे tan थीटा लाना है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थीटा प्लस ये सेक थीटा ही होना चाहिए प्लस 1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. हमें राइट करेक्शन देखो कर लिया है ना, Yes. क्योंकि और सेक थीटा का थोड़ा tan थीटा हो जाएगा, वो दोनों कट गए. तो फाइनली क्या बचा अपना, बोलो क्लास, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, tan theta. therefore LHS will be equal to RHS. Hence the proof. समझा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सो ये भी क्वेश्चन ओके ओके था. अब मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे. ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू बोथ सीबीएसई एंड स्टेट. ये निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? Yes, sir. कैसे करेंगे बताओ. दिस इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. So area of this shaded region, so area of that shaded region is, you can say that what is the shaded region? Shaded region is PAQC, the entire region, PAQC. So this is area of quarter circle, मतलब ये वाला पूरा, minus area of ये वाला सर्कल. Am I right? ये white हो गया. Am I right? Yes, sir. तो Yes, वो आप sir. नोटेशन के हिसाब से तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर. तो व्हाट इज द रेडियस इज गिवन टू बी 20. सो पाई 20 का स्क्वायर माइनस, दिस इज अगेन, दिस इज sorry, this 20 is not of, this is 20, I'm sorry, this is 20. So what is this AQ? Yes, what is this AQ? We have to, very specific while, what is this AQ? How do I find AQ? Can anybody tell me? AD plus Yes, class. So side of the square ABCD is radius 20 centimeter. यहाँ पे दिया हुआ है पूरा. ओके, तो अपन उसके हिसाब से चलते, चलो करते हैं. अब इसको अपन सॉल्व करके इसको 2 पेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. देखो मैं आपके सामने 2 पेज कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो और आसान हो जाएगा. 2 पेजेस. नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, प्लीज ध्यान दो सभी. ये है आपके सामने क्वेश्चंस, राइट. तो चलिए करते हैं इसको. तो सबसे पहले आपने देखा ये 20 हो गया. एरिया ऑफ जो स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब ये वाला जो स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या निकाला, 20 का स्क्वायर. 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 400 400. सेंटीमीटर स्क्वायर. इज दिस अंडरस्टूड? फिर Yes. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज वेरी सिंपल. एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, अपन फालतू टाइम पास कर रहे दिया है. एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, स्क्वायर एबीसीडी आपको दिख रहा है, ये और ये है, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर सीबीएक्सडी. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू व्हाट, Into पाई pi r आर square. स्क्वायर. So this is pi r square. So pi के जगह 3.14 डाल दिए, और r स्क्वायर तुमको पता है कितना, 400. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना. चलिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए.
है ना, देखते पेशेंस से सॉल्व करते हैं। हाउ डू आई सॉल्व? यस क्लास। तो थीटा तो 90 है, कैसे पता थीटा 90 है? अरे भैया ये जो एंगल है ये कितना एंगल है, थीटा कितना है? 90 डिग्री है, हमें राइट। Yes, sir. सो 90 Yes. इज 1/4, एग्रीड। 1/4, 4 1 जा 4, 4 कितने जा 100. 100 जा। तो 3.14 into 100 will create 31400 point either. So this will be 314. 314. Answer is 314. So answer is how much beta? You know, that is, yes class. कितना 14 गया तो कितना 86. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. सारा समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस, ज्योमेट्री में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप लोग को तकलीफ दिया बेटा? Sir, last one. Last question, sir. बेटा तो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है ना? ए 7 Yes, sir. 7:2 फाइंड, ये तो अपन इजीली कर लेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन तो अपन ने ले ही लिए। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Yes, राइट? sir. Both नहीं of them. नहीं, Sir, question number दिस 4, four also. 4 आल्सो, अच्छा 4 आल्सो। सो लेट मी चेक आउट 4 का कौन सा वाला, 4 में तो 3 है। Sir, first. फर्स्ट वन। Yes, sir. अच्छा हम लोग थोड़ा बैक ट्रैक से करते हैं। तो बैक ट्रैक मतलब पहले पीछे वाले से सॉल्व करते हैं, मतलब पीछे वाले में फिफ्थ में कुछ है प्रॉब्लम? Yes, sir. Both of them. Yes, sir. Yes. बोथ ऑफ देम, बट वी हैव टू सॉल्व एनी वन। तो मैं तुमको दोनों का आंसर दे देता हूँ, दोनों तुम्हारे कोर्स में है, मतलब सीबीएसई और स्टेट दोनों। चलो ध्यान दो। सो इफ दिस इज, अरे इसका प्रिंट बहुत खराब है। हाँ, AC इज, दिस इज A, this is C, and this is B, and this is given to be how much? 10 centimeter. This is given to be how much? 8 centimeter, and this is given to be how much? 12 centimeter. Agreed? Yes, sir. So I know very well, what I know very well, कि this distance बराबर this, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। This distance because tangent from external point, length of the tangents are equal, सबको पता है ना? This equal to this, ये पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. This is X, this is X. If this is Y, this is Y. And if this is Z, then this is Z. We have to find the length of what? AD. That means we have to find that is AD. AD मतलब ये X length. That is indirectly मुझे क्या निकालना है बेटा? X. Agreed? Yes, sir. Yes. हो गया। तो अपन देख सकते हैं ना, 3 इक्वेशन है। पहले बताओ x प्लस वाई कितना है? 12, 12. राइट? और y प्लस z कितना है? 8। 8. एंड x प्लस z कितना है? 10। 10. तो चिल्लर क्वेश्चन हो गया ये। अगर मैंने ये दोनों को माइनस कर दिया तो y y कैंसिल, तो x माइनस z कितना आएगा? 4। अब ये दोनों को ऐड कर दिया तो z z कैंसिल, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू कितना आ गया? 7। 7. आंसर 7 है ना? मस्त। Yes, सारा sir. बाकी, isn't that very simple? Yes, sir. Yes, sir. sir. So I solved it like a pro because मुझे पता है ना आप लोग को 100 में से 100, मतलब 80 में से 80 दिलाना है, तो कैसे करना है। तो इसको सिस्टमेटिक लिखोगे तो बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाए। अब ये वाला करो, कराओ क्या? दिस इज रियली Yes. ओके क्वेश्चन। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. so guys, how to do this? Come on. The first step is tan square x cannot be touched. So सारा आपको समझ में आ रहा है ना? And what हाँ, is sir. 1 by cos square x? Come on, all of you. What is 1 by cos square x? Cos square x is nothing but sec square x. Now you have been taught that, what you have been taught? That sec square theta is 1 plus. Tan square theta. So I can easily see now, in place of sec square theta, I would rather put 1 plus tan square x. So now अंदर लेके चलो, 9 tan square x minus 9 tan square x.
So what will cancel? This will cancel. So answer comes out to be how much, guys? Minus 9. 9. Isn't that simple? Yes, sir. Yes. Please take a note of this. और तुम्हारा फिर क्वेश्चन 4 भी करा दूंगा मैं, चिंता मत करो. Excuse me, sir. बेटा, Sir, can we change that 10 square x as sin square x upon cos square x? yes, we can change and we can get the perhaps same answer. देखो तो same answer आता है कि मैं करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो. Once you are done, let me know, beta, all of you. Sir, Is it done, guys, all of you? Yes, sir. So 1 minute. तो what you are asking कि सर इसको कैसे कर सकते हैं? Sorry, एक बार फिर देख लेते हैं आपने जो पूछा. yes, sir. Sir, can we change that 10 square x as sin square x upon cos square x? Let me try it with respect to your logic. Sin square x plus cos square x minus 9 by cos square x. So guys, what is the LCM? Cos Cos square square. x. Now next step, what is common? 9. So sin square x minus 1 upon. But can I take minus common? So this will become minus sin square x. And what is 1 minus sin square x? Come on. Cos Cos square x square x. upon cos square x. Cancel, cancel. The answer comes out to be again minus 9. Is this okay, Minus guys, 9. all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So both ways it is true. मैंने बोला ना, मैं जब आपको पेपर सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा. अभी सीबीएसई के भी पेपर्स जब डिस्कस होंगे अलग अलग होंगे. वैसे आज तो कॉमन प्लेटफॉर्म इसलिए अपन कर रहे हैं, है ना. तो सीबीएसई के पेपर डिस्कस होंगे तो आप लोग को समझ आएगा कितना आसान हो जाता है ना. दिस क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 1 was the problem or 2 or 3? Sir, question number 1. PS is the bisector of PQR. बाइसेक्टर का मतलब होता है दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल. और मैंने बाइसेक्टर के ऊपर थ्योरम क्या पढ़ाया था, याद करो दोनों को. स्ट्रेट बोर्ड, if this is xy and this is AB, then we have x by y equal to a by b. Agreed? Yes, Yes. sir. So we have PQ, that is this is x and this is y. PQ by, yes class, PR will be equal to what upon what, class? Come on. QS upon Is SR. upon
that is A upon B. By which theorem? Angle bisector. Agreed all of you? Angle bus. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Angle bisector theorem. Now having understood this fact, हम एक काम करते हैं ना, बाजू वाले को मिटा देते हैं ताकि मेरे पास जगह बच जाए, है ना? आई एम इरेजिंग दिस, या फिर एक काम करते हैं, इसको इतना मिटाने से अच्छा इसको चलो मिटा ही देते हैं, बिकॉज इट विल ईट अप आवर टाइम. कैंसिल. हाँ, मिटाने में ना बट टाइम जाता है, इसलिए मैं सोच रहा था इसको रीलोड करूं. चलो ठीक है, मिट तो गया ऑलमोस्ट. कुछ 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 छोड़ के इसको मिटाने में. हाँ चलो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ तक समझा सबको क्या किया मैंने? Yes, Yes, sir. sir. हम्म. अब मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट. सो एलएचएस लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस क्लास, पी क्यू एस. वेरी पंचर क्वेश्चन, हाँ. अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस क्लास, पी आर Yeah. एस. So what is area of triangle? Half base. What is PQS ka base? QS is base. So QS into height. Height is what? PM. Whole PM. upon half. What is PRS? PRS मतलब ये वाला. So उसका भी अगर तुम देखोगे ना, PRS का बेस SR है. Am I right? Star. SR है. लेकिन उसकी हाइट भी क्या है? PM. Agreed? PM. So खत्म करो. Yes, sir. हाफ कैंसल एंड पीएम Cancel. पीएम कैंसल एंड Yes. QS अपॉन क्या आ गया? SR. बट QS अपॉन SR फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 is nothing but PQ upon PR. By which theorem? Angle bisector. Angle bisector theorem. Hence the proof. है ना? कितना चिल्लर बना दिया ना? सही है. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा अभी तुमको पता ग्लिम्स दे दिया मैंने. अभी जो नेक्स्ट लेवल का रिवीजन शुरू होगा वो तो कमाल का होगा. अभी और बच्चे जो भी ज्वाइन करेंगे उनको भी फिर से सब कुछ मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे मिलेगा रिवीजन पूरे चैप्टर्स का. और मैं टेस्ट पेपर भी डिस्कस करूंगा. मैं टेस्ट सीरीज सिर्फ उन बच्चों के लिए रहेगा जो मेरे तीनों रिवीजन करने के बाद उसको अलग से ज्वाइन करेंगे. टेस्ट सीरीज में बहुत तामझाम वाला काम है. पेपर मैं डिजाइन करूंगा, आपका पेपर आएगा, उसको चेक करूंगा, एनालिसिस दूंगा. सो इट इज अ प्रीमियम थिंग, है ना? सबके लिए नहीं है. बाकी 3 बार रिवीजन एज पर कमिटमेंट लास्ट मंथ का 6 या 10 तारीख तक कंप्लीट हुआ. अभी ये इसके संक्रांत के बाद मतलब परसों से अपना ये रिवीजन शेड्यूल शुरू हो जाएगा. इज इट ओके गाइस? Yes, Yes, sir. sir. आज के लिए इतना रहने देते हैं. Yes, sir. Yes, sir. चलो कम ऑन स्क्रीन ऑल ऑफ यू. चलो थैंक यू गाइस. अपन जो भी अपना ये रहेगा ना, सेशन रहेगा ना, अभी और ये बच्चे जा रहे आ रहे ऐसा हो रहा है, वो हम लोग ऐसा ही ग्रुप के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे. और अभी हम लोग ना बोर्ड्स के लेवल का क्वेश्चन करेंगे सेकंड रिवीजन. और थर्ड इसमें मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, मतलब थर्ड रिवीजन में तुमको वो पत्ते खोलूंगा जिसमें बोर्ड्स में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं वो अपन करने वाले. इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू गाइस. टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट. Thank अच्छा, you, हैप्पी sir. Bye, संक्रांति. sir. प्ले सेफ. संक्रांति बाय द वे मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ, बट प्ले सेफ बिकॉज नाइलॉन if it is used then it is punishable act. You can be taken to custody police because it is subject to accident and death. And make sure you don't go out. Even if you go out, so put a scarf at the neck and be safe, right? Yes. sir. Thank Chalo, you, God sir. bless Bye, you. sir. Bye. sir. Bye. Take care. Bye, sir.